Hello students, welcome back to your biology class. Today we will discuss about next type of animal tissue, that is nervous tissue. Okay, before starting about the nervous tissue, let's think about a situation. Have you ever wondered that when you touch any hot thing, आप सोचते हो कभी कि जब आप एक गर्म चीज को हाथ लगाते हो एकदम से आपका हाथ पीछे क्यों आता है? ऐसा क्या हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर कि एकदम से आपको ये पता चलता है कि आपको वहां से अपना हाथ हटाना है? ये इस वजह से होता है बिकॉज दैट things is controlled by our nervous system, which is our own personal supercomputer. हमारे खुद की बॉडी का जो सुपर कंप्यूटर है, जो नर्वस सिस्टम है, वो आपको एक इंस्ट्रक्शन देता है that this thing is harmful for you, कि आप अगर इसको होल्ड करके रखेंगे, टच करके रखेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको अपना हाथ हटा लेना चाहिए. तो आज हम बात कर रहे हैं उसी नर्वस सिस्टम के बारे में कि कैसे वो नर्वस सिस्टम किस वजह से या किन कंपोनेंट की वजह से द नर्वस सिस्टम इज एबल टू गिव अस आइडिया अबाउट दैट वेदर वी हैव टू टच और फ्रॉम वेयर वी हैव टू पुल आवर हैंड. Okay, so nervous system, we are discussing about nervous system. Our nervous system is made up of two component. दो component से मिलके हमारा nervous system बना है. Nervous system, if we talk about our nervous system, that nervous system is made up of two component. First, the two main organ we can say. The first important organ is our brain and second important organ is our spinal cord. ये है हमारा नर्वस सिस्टम. इन दो ऑर्गन्स के कॉम्पोजिशन से हमारा नर्वस सिस्टम फॉर्म हुआ है, ब्रेन और स्पाइनल कोड. these organs of the nervous systems are made up of नर्वस टिश्यूज. ये जो नर्वस सिस्टम के हमारे नर्वस सिस्टम के जो ऑर्गन्स है, ब्रेन और स्पाइनल कोड, ये बने किसके हैं? दीज आर फॉर्म फ्रॉम नर्वस टिश्यूज. ये बने हैं हम नर्वस टिश्यूज के. दे आर फॉर्म फ्रॉम नर्वस tissues, and about these nervous tissues we are going to discuss today. इन्हीं nervous tissue के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. Nervous tissue which formed our nervous system, this is very important part of our body. इसी की वजह से हम कुछ भी चीज को सेंस कर पा रहे हैं. We can feel, we can react. जो भी काम हम अपनी बॉडी में कर रहे हैं, चाहे वो रिएक्शन हो किसी भी चीज के अगेंस्ट या किसी चीज की फीलिंग है, like you can feel cold, you can feel cold. That all thing is done by our this nervous system because of the presence of nervous tissues. These nervous tissues are made up of some specialized cells. ये जो nervous tissues हैं, ये एक special cell के composition से बने हैं. They are formed from some specific cells, and the cells which form the nervous tissues are known as neuron. उन्हें हम क्या बोलते हैं? They are known as neuron. And here we are going to discuss about the complete structure of the neuron. ये जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, ये किसका डायग्राम है? This is the diagram of neuron. ये एक न्यूरॉन का डायग्राम है. न्यूरॉन is the cells, nerve fibers we can say, that is the nerve fiber which continuously join together one with another and they form the nervous tissue. जो एक के बाद एक जुड़ते रहते हैं और जुड़ने के बाद, joining के बाद they form nervous tissues, and these nervous tissues form our main nervous system. This is brain and spinal cord. So this is न्यूरॉन. न्यूरॉन हैज थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. न्यूरॉन के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जो उसकी स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं. इट हैज थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इज इट्स साइटोन पार्ट. ये फर्स्ट पार्ट है जिसे हम बोल रहे हैं साइटोन, और वी कैन कॉल इट सेल बॉडी. इसका जो दूसरा नाम है वो है सेल बॉडी. सो दिस इज द फर्स्ट structure component of the neuron, that is cyton or cell body. The second part of the neuron is dendrite. Second part is dendrite, and the third part of the neuron is axon. This is the axon. तो इन तीन पार्ट के composition से बना है न्यूरॉन. We will discuss about all these parts one by one. First start with the cyton. Cyton or cell body. This is the main part of the nervous system which have a large nucleus. ये वो पार्ट है नर्वस न्यूरॉन का जिसके अंदर एक लार्ज साइज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. दे हैव लार्ज न्यूक्लियस, इनके अंदर एक लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंड दे हैव साइटोप्लाज्म आल्सो. साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट रहेगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द न्यूक्लियस व्हिच वी हैव ड्रॉन हियर. दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द साइटोन,
एंड यहाँ न्यूक्लियस के अलावा और जो ये पार्ट है दैट पार्ट इज फिल्ड बाय साइटोप्लाज्म। ये जो पूरा पार्ट है ये फिल हुआ है साइटोप्लाज्म से। So this is the part of nervous neuron that is known as cell body or cyton, which has large nucleus and cytoplasm. This part have some projections. इस पार्ट के कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं। These are the some projections which arise from this central part. इस साइटोन और सेल बॉडी से अराइज हुए कुछ प्रोजेक्शंस हैं and these projections are known as dendrites. इन प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। अब ये डेंड्राइट क्या है? डेंड्राइट्स वर्क टू रिसीव द सिग्नल्स। डेंड्राइट्स का काम है कि ये सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। दे रिसीव द सिग्नल्स लाइक they are remain in connection with some another neuron and they receive signals. ये सिग्नल को रिसीव करेंगे and then they transmit these signals to the cell body. और सिग्नल्स को कहाँ ट्रांसमिट करेंगे? सेल बॉडी, so that these signals can be transmitted through axon, ताकि वो axon के थ्रू आगे की तरफ ट्रांसमिट किए जा सके। So this is about the dendrite. Dendrites are the projections which arises from the cell body or cyton. They sense or receive signals and then transmit these signals to the cyton so that they can be transmitted through the axons. So ताकि ये और आगे ट्रांसमिट किए जा सके to the next neuron. This is about dendrite. Now third part, that is the long part of the neuron. ये लंबा एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग पार्ट होता है एक्सन। एक्सन की जो लेंथ होती है वो अलग अलग हो सकती है। एक्सन्स बहुत लंबे होते हैं सो दैट दे कैन ट्रांसमिट सिग्नल्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। इन्हें बहुत दूर तक ट्रैवल करना, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है, इस वजह से इनकी जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ी हो सकती है। दिस इज द लॉन्ग पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, axon. Axon arises from the cell body. यहाँ पे cell body से ही arise होगा और आगे की तरफ at the end these axons have some terminals. यहाँ पे axon के end में भी terminals है, इन्हें हम बोल सकते हैं axon terminals. These terminals are known as axon terminal. So in the end they form a terminal like structure. And through these terminals, this axon remain in connection with some another neuron. इन्हीं terminals की help से neuron जो होगा, ये एक neuron जो है किसी दूसरे neuron के साथ connection में रहेगा, touch में रहेगा, so that they can transmit signals. Actually, the function of the neuron is to transmit signal. ये आप समझ चुके हैं। न्यूरॉन का काम है ट्रांसमिट करना सिग्नल्स को एंड दिस सिग्नल्स आर ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। वी कैन से दे आर इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में, इंपल्स की फॉर्म में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। यहां से सिग्नल आया और ये यहां से ट्रांसमिट होते हुए थ्रू दिस एक्सॉन टर्मिनल दिस सिग्नल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो ये नेक्स्ट न्यूरॉन को ट्रांसमिट हो जाएगा। सो दिस इज एक्सॉन व्हिच इज द लॉन्ग स्ट्रक्चर, लॉन्ग पार्ट ऑफ द न्यूरॉन and its function is to transmit the signals over a long distance. This axon is covered by a sheet of a lipid. ये जो axon के ऊपर आप देख पा रहे हैं, this is the sheet and this sheet is formed from myelin. ये जो sheet है ये बनी हुई है myelin की. This myelin is a lipid. This is a lipid and this sheet which is made up of myelin is known as myelin sheath. इसे हम बोल देते हैं myelin sheath. This is myelin sheath. So this myelin sheath covers, is protects or insulate these axon. इसका काम क्या है? This myelin sheath protect or insulate the axon. This myelin sheath is not present in the continuous manner. जो myelin sheath है ये continuous manner में present नहीं है. In the presence of these myelin sheaths, some gaps remain there. यहाँ पे कुछ gaps आप देख पा रहे हैं कि कुछ जगहों पे गैप प्रेजेंट है जहां पे माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है। These gaps where myelin sheet is not present are known as nodes of Ranvier. These gaps are known as nodes of Ranvier. इन गैप्स का नाम है, these are known as nodes of Ranvier. So on the presence of this myelin sheet है जो कि लिपिड की बनी हुई है and this myelin sheet is not continuous, some gaps remain there and these gaps are known as nodes of Ranvier. On the presence of myelin sheet or absence, myelin sheet present है या नहीं है, उसके बेसिस पे axons के भी या न्यूरॉन के, we can say neuron have two types. One, myelinated neurons in which myelin sheet is present and second one is non-myelinated neuron जिसके अंदर myelin sheet present नहीं होती. So these are the two types of the neuron on the basis of presence of myelin sheet.
So this is the structure of the neuron. It has three important parts: cyton or cell body, projections that arises from the cyton, these are the dendrites, and the long terminal which transport signals over long distance, this is axon. At the end of the axons, it also have some terminals which are known as axon terminals. इन्हें बोलेंगे axon terminals. And this axon is protected or insulated by a sheet, that is myelin sheet. Myelin sheet से ये cover रहता है. So here we discuss the structure of the neuron. Now let's take a look on the type of neuron. Neurons के भी type होते हैं. On the basis of their functions, we can divide neurons into two types. हम neurons को two type में divide करते हैं. Neurons can be divided into two types on the basis of their functions. First, neurons which are known as sensory neuron. First type of neuron is sensory neuron. What is this neurons? क्या है इनका function? Let's see. Sensory neurons are the neurons which carry signals from the body parts to this nervous system. ये वो न्यूरॉन है जो हमारे बॉडी पार्ट से या फिर जहां से सेंसेस को रिसीव किया गया वहां से सेंसेस को रिसीव करके दे कैरी सिग्नल्स फ्रॉम दैट पार्ट टू अवर नर्वस सिस्टम. जब आप किसी गर्म चीज को टच कर रहे हैं तो वहां पे आपके उस बॉडी पार्ट से वहां से सिग्नल्स को कैरी करके ब्रेन तक या हमारे नर्वस सिस्टम तक लेके जाने का काम जो करेंगे न्यूरॉन्स, these neurons are sensory neuron. So their function is to carry signals from body parts to the nervous system. So they carry signals from body parts. ये body parts से लेके जाएंगे कहां तक? हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, या हम कह सकते हैं they carry signals from the nervous system. So they carry signals from body parts to nervous system. These neurons are known as sensory neuron. Second type of neurons which carry signals from nervous system, from our central nervous system to the body parts. Ab same, if we discuss the same example, when we touch the hot object, signals is transmitted from body parts to our central nervous system. हमारे ब्रेन तक, हमारे central nervous system तक सिग्नल पहुंच गया कि किसी गर्म चीज को टच किया गया है. Now अब हमारा ब्रेन हमें बताएगा कि how we have to react, हमें कैसे रिएक्ट करना है. उसका सिग्नल जो क्या रिएक्शन हमें परफॉर्म करनी है, दैट सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी पार्ट. वो सिग्नल अब ब्रेन से हमारे बॉडी पार्ट तक जाएगा. एंड द न्यूरॉन्स व्हिच कैरी दीज सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन टू अवर बॉडी पार्ट, दीज न्यूरॉन्स आर नोन एज मोटर न्यूरॉन. उन न्यूरॉन को हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन. सो दीज आर द न्यूरॉन्स व्हिच कैरी सिग्नल फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट. जो ब्रेन से बॉडी पार्ट तक सिग्नल लेके जाने का काम करेंगे, these neurons are known as motor neuron. So here we discuss two types of neuron also, sensory neuron and motor neuron. Sensory neuron which carry signals from body parts to central nervous system, and motor neuron which carry signals from central nervous system to our affected body parts. So these are the two types of neurons. Now here we have to know one more important thing is that these neurons do not get repaired or regenerate. Neurons अगर डैमेज हो जाते हैं तो ये कभी भी रिपेयर नहीं होते और ना ही कभी रीजनरेट होते हैं. That's why the neurological disorders cannot be cured. कोई भी न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होती हैं उनका कोई इलाज नहीं होता, because neuron do not get repaired and regenerate. That's all about this nervous system or nervous tissue. Here with this topic that is the nervous tissues, we completed our chapter here. This is the tissues. So I hope you are able to understand the complete chapter. For the next chapter, keep watching my videos and keep studying and keep learning. Thank you.